Hey everyone, good afternoon. Very warm welcome to this session. We will continue chapter of magnetic effect of electric current. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे about magnetic effect of electric current. कौन से टाइप के कंडक्टर में? Straight कंडक्टर में. Okay. So this is the session for my class 10 students. एंड सीबीएसई बोर्ड साइंस सब्जेक्ट में ये आपके टर्म 2 का चैप्टर है 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक सेशन मैंने लास्ट टाइम दिया था, इसका फर्स्ट सेशन वेयर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये हमने देख लिया है। अब हम आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट मोस्टली इट इज अबाउट द स्ट्रेट कंडक्टर। सो लेट्स get started. Magnetic field in a straight conductor. तो चलो, straight conductor क्यों लिखा है ये टॉपिक में? इसका मतलब है कि ये शेप है कंडक्टर का। ओके, स्ट्रेट कंडक्टर है एंड देन देयर मे बी अ सर्कुलर लूप, देयर मे बी अ सोलेनॉइड। कंडक्टर जो है करंट कैरी कर रहा है, उसका शेप अलग अलग है। तो आज हम इसमें कौन सा पढ़ने वाले हैं कि इफ द कंडक्टर इज स्ट्रेट, okay, then what type of magnetic field is there, क्या है इसके फैक्टर्स एंड पैटर्न क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी वन वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसमें इस पार्ट में सबसे पहले तो हमें करने हैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करना है। ओके, सम डायग्राम्स एंड कुछ एक्टिविटीज हैं, बट आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद द राइट हैंड थंब रूल। वो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि फिर उसके बाद हम बाकी के देखेंगे एक्टिविटीज एंड ओके, एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। तो जब मैं आई विल शो यू दो सर्किट डायग्राम्स ना, सो यू विल अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ये स्टार्ट कर देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल एंड इसका वन मोर वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सवेल्स। इसको ही राइट हैंड थंब रूल को ही हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। ओके, क्या है ये रूल? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सो यू नो वी आर स्टडीइंग टुडे अबाउट अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये जो ब्लू दिखाया है, ब्लू दिख रहा है आपको, दैट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर। एंड इफ वी इमेजिन कि हम ऐसा एक स्ट्रेट कंडक्टर वी आर होल्डिंग इन आवर राइट हैंड। ठीक है, सो लेट मी शो यू, वन मिनट। या तो अगर हमने ऐसे कंडक्टर, जैसे मैंने पेन पकड़ा है एंड इफ आई होल्ड द कंडक्टर इन माय राइट हैंड एंड द थंब, जो मेरा डायरेक्शन है थंब का, यू कैन सी इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। लेट मी शिफ्ट दिस साइड। ओके, नो, यहाँ पे बेटर दिखेगा। ओके, ठीक है। तो हियर इफ मैंने ब्लैक पेन पकड़ा है अपने राइट हैंड में एंड थंब जो है इट इज पॉइंटिंग इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड्स। तो if you hold the straight conductor in your right hand and you imagine the thumb to show the direction of the current, तो इस केस में आप देख रहे हो कि करंट जो है वो अपवर्ड्स है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है यहाँ पे? ये जो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स हैं, these represent the direction of magnetic field for this conductor. कंडक्टर यानी when current will pass through the conductor, क्योंकि we know magnetic effect, ये magnetic field will be created when the current is passing through the conductor. तो as soon as I pass current through this conductor, तो इसके अराउंड होगी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस। ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं यू कैन सी, तो आप अपना भी करके देख सकते हो। हियर यू हैव टू सी इट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हियर माय कर्ल्ड फिंगर्स, ये स्टार्टिंग फ्रॉम this part to the tip of the finger, so this is my anti-clockwise direction. Okay, so this is what is right hand thumb rule, very important। आपको ये ही रूल यूज करके आज हम जितने भी डायग्राम्स देखेंगे उसमें आप ये रूल अप्लाई करना एंड देन वी विल सी द डायरेक्शन।
अगर आप बोलो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड्स, देन यू कैन होल्ड इट लाइक दिस. ओके, 1 मिनट. यस. तो एंड देन अगर लेफ्ट में है करंट तो ऐसे कंडक्टर पकड़ना है, एंड सो ऑन. तो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल. इसको हम, सो हियर यू कैन सी व्हाट विल बी द स्टेटमेंट. So according to the right hand thumb rule, if we imagine that we are holding the current carrying conductor in a right hand, rule में लिखा है right hand thumb rule, तो ये right hand में ही applicable है, not for the left hand. If we hold the conductor, straight conductor in a right hand, then if the thumb represents the direction of the current, तो our curled fingers will represent the direction of the magnetic field. ये हो गया right hand thumb rule. So please understand this clearly. एकदम clear है, कुछ भी doubt है तो ask me. Similarly, ये we can also say this is Maxwell's corkscrew rule. क्या है corkscrew? What is corkscrew? Is nothing but normal screws you must have seen. Okay, कोई भी ऐसे जो screw होता है और उसको कुछ threading होती है ना? So अब screw का क्या है? If I want to put the screw, अगर ये suppose वॉल है, अगर स्क्रू को वॉल के अंदर डालना है तो आई विल हैव टू दिस इन दिस डायरेक्शन आई वांट टू मूव इट. तो हाउ विल आई रोटेट द स्क्रू? इन दिस केस मेरी रोटेशन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, राइट? क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तभी वो नीचे जाएगा ना स्क्रू. दिस इज नॉर्मल, लाइक कोई भी ढक्कन, इफ देयर इज एनी बॉटल का ढक्कन हो या कुछ भी हो, और इवन टैप फॉर दैट केस, तो हमें जब भी क्लोज करना होता है, ओके, नीचे की तरफ इट विल गो व्हेन यू, सो बाकी चीजों में ये नीचे ऊपर तो नहीं होगा, बट आई एम सेइंग, इसलिए मैंने स्क्रू का एग्जांपल लिया कि क्योंकि दिस एरो इज, व्हाट डज दिस डायरेक्शन शो? कॉर्कस्क्रू रूल में दिस शोज अस द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड ये जो रोटेशन ऑफ द स्क्रू है, दिस विल शो मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगेन ये जो स्क्रू है ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यू कैन सी हियर अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है डाउनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज. एंड इसमें हमने क्या देखा है? यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड्स, तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? देखो, एंटी क्लॉकवाइज. सो एनी हाउ आप एक ही इसको भी, अगर हमको ये स्क्रू ऊपर की तरफ, इफ आई वांट टू रिमूव इट फ्रॉम सम प्लेस, इफ आई वांट टू रिमूव इट फ्रॉम दिस प्लेस, तो ऊपर दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आई विल हैव टू मूव इट एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो यू कैन रिमेम्बर दिस, यू कैन एक्चुअली यू मस्ट लर्न हाउ टू डू दिस, लेकिन अगर नहीं आ रहा है हाथ से या स्क्रू से, तो जस्ट रिमेम्बर इट के डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपवर्ड्स है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंड वाइस वर्सा. अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज. यस. सो नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट एंड सी कि स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कहां से क्रिएट हुई और क्यों क्रिएट हुई, एंड यू विल आल्सो सी सम फैक्टर्स. Okay, so I'll start it again. Yes. So magnetic field due to current carrying straight conductor, and you have to say it's a current carrying conductor because ऐसे ही अगर कोई भी conductor है या thick wire, but current ही नहीं pass हो रहा उससे तो magnetic field नहीं होगी उसमें. That is very logical. So if this is a wire, if this is a conductor, and ये जो red में दिख रहा है हमें, this is the direction of the current. So we can see ये और ये जो मैं ब्लैक में दिखा रही हूँ जो रेड में था, अगर ये करंट का डायरेक्शन है कंडक्टर में, तो इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड राउंड इट, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया है. सो वी कैन सी दिस डायरेक्शन. ओके, तो नाउ आई हैव शोन यू द राइट हैंड थंब रूल. इसी डायग्राम में आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखो. सो हियर this will be the way you will hold the conductor. Okay, and if you hold it like this, what will be the direction of magnetic field? Just check the curled fingers ka direction. What is it? The direction of the curled fingers is
clockwise. Okay, from the upper part of your finger to the nails to your fingertips. So that is clockwise in this case. Okay. Oh, sorry, this is not clockwise, this is anti-clockwise. Clockwise is like this. Yeah, anti-clockwise. Here, this is anti-clockwise. So, in the diagram also, you can see यहाँ पे anti-clockwise. So, keep practicing this, how to understand the direction. So, ये जो है studies हुई, experiment हुआ, क्या हुआ इसमें? तो magnetic field ये जो create हुई है straight conductor में, how will this vary with the direction of current? ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हुआ या चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स ही होगा. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अपवर्ड्स करंट में हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज. बट इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. सी इफ वी मेक दिस सेटअप, व्हाट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर. ये बैटरी है, प्लग की है, एंड दिस इज अ थिक कॉपर वायर. This one we have to use a thick copper wire. ये बाकी तो कनेक्टिंग वायर हैं ही, लेकिन ये कॉपर वायर भी हमको थिक यूज करनी है क्योंकि जितनी थिक यूज करेंगे, you have studied that thickness, more the thickness means what? More is the area of cross section. And what can you say about resistance of this wire? You know how resistance depends on area of cross section. Inverse relation है दोनों में, right? Which means अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, which means it will hold a little better. Current will flow through this. तो उसे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम डिटेक्ट कर पाएंगे इजीली. ओके, we can, because we are studying effect of magnetic field over here. So now here ये करंट पास होगा इन what डायरेक्शन. ये देखो पॉजिटिव यहाँ पे है, तो आपको करंट का डायरेक्शन कैसे पहचानना है? बाय सीइंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा है करंट का डायरेक्शन, मींस हियर टू हियर, एंड इन द कंडक्टर इट इज इन दिस डायरेक्शन. सो वी से ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ. ये देखो अगर हम ऐसा डायरेक्शन देखें, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, and this is east and this is west. So in this diagram the direction of current is north to south, correct? And ये जो है हमको यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए a compass is kept, wire is kept above the compass. This also you have to remember, ठीक है? So the wire will be, क्या है पोजीशन वायर की? It is parallel and over the compass. This is important क्योंकि if the wire is below the compass तो उसका डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का अलग होगा, will not be the same. Okay, तो ये हुआ wire is kept parallel and is kept over the compass, and current direction we can see north to south है अगर like this. तो compass में as soon as we complete the circuit ये प्लग कर दिया की को, स्विच ऑन किया, प्लग किया, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द वायर. एंड ये जो कंपास है, हियर विल सी अ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन? इन दिस केस द डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट. ओके, ये देखो इस तरफ डिफ्लेक्शन, हियर इट इज रिटन टुवर्ड्स द ईस्ट. तो हियर व्हाट विल यू रिमेंबर? यू कैन रिमेंबर दिस बाय जस्ट रिमेंबरिंग एनएससी. ओके, अगर आपको कोई और फुल फॉर्म पता है एनएससी का, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन दिस वायर, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज टुवर्ड्स द ईस्ट. नाउ इफ वी वांट टू चेक वन पैरामीटर, अभी हमें क्या चेक करना है कि करंट का डायरेक्शन, इफ आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, हाउ विल आई डू दैट? कैसे करेंगे हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स? अगर आपके पास ये सर्किट है, बैटरी है, प्लग की है, और ये वायर है, थिक कॉपर वायर है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसे रिवर्स हो जाएगा इसमें? इन दिस सर्किट, थिंक अबाउट इट. सो टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट आई विल हैव टू डू?
ये जो मैंने यहाँ पे बैटरी ऐसे कनेक्ट की थी, पॉजिटिव टर्मिनल हियर, नेगेटिव टर्मिनल हियर, सो मुझे इसकी बस पोलैरिटी रिवर्स करनी होगी, नेगेटिव हियर पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर पॉजिटिव हियर, अपने आप करंट का डायरेक्शन हो जाएगा रिवर्स, because current we are going to show from positive to negative. तो when I reverse my polarity, ये बैटरी को मैं डायरेक्शन अगर चेंज कर दूं, रिवर्स कर दूं, so let's see what diagram we will get in that case. See a circuit diagram here now. तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो कंपास रखा था हमने, इसके डिफ्लेक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है. सो ये यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्लस, यू कैन सी लेफ्ट में था, माइनस राइट में था, तो नॉर्थ टू साउथ था. नाउ हियर यू कैन सी आई हैव रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, माइनस प्लस लेफ्ट में है और प्लस राइट में है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब अब करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, यानी कि ये वायर में फ्लो कर रहा है इस तरह, तो ये क्या डायरेक्शन है, करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ जा रहा है करंट. सो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व इज ऑपोजिट, टुवर्ड्स द वेस्ट हो जाएगी. अब यहाँ पे टुवर्ड्स द ईस्ट थी, यहाँ पे द रिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट. यू कैन सी हियर दिस इज द वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो इससे प्रूव क्या हुआ, इससे प्रूव ये हुआ कि when we are changing, when we are reversing the direction of current, then the direction of magnetic field also changes. Okay, so this point is proved. ये एक important property भी है, so remember this property. Now what will be the pattern of this magnetic field? Magnetic field lines का हमेशा एक pattern होता है. पिछले सेशन में we had seen बार मैग्नेट में कैसा है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो हियर वी आर गोइंग टू सी के स्ट्रेट कंडक्टर में पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है. सो वो फाइंड आउट करने के लिए वी कैन टेक सम सिंपल दिस थिंग्स एंड वी कैन मेक अ सर्किट. एक बैटरी ले लेंगे, एमीटर टू मेजर द करंट वैल्यू, क्योंकि हम करंट को भी बाद में चेंज करके देखने वाले हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करके. Then variable resistance लेंगे so that we can increase or decrease the current. And then plug की तो चाहिए ही, और ये कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर यूज करेंगे एंड उसको पास करेंगे थ्रू अ होल इन दिस कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड लेना है एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ये कार्डबोर्ड शुड बी परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए. वायर विल बी परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द cardboard. So if this is the cardboard like this, wire should be like this and passing through the hole in the cardboard. Okay. So ये arrangement करनी है and we will join, and ये cardboard के ऊपर iron filing sprinkle कर देंगे. Okay, evenly distribute. You can use a salt sprinkler again for this, और circuit कर लेंगे complete. When we start passing the current, what will happen in this? जैसे ही करंट पास करना शुरू होगा, ये जो है आयन फाइलिंग्स ये अरेंज कर लेंगे अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में, and that pattern is going to show us the magnetic lines, magnetic field lines. And what type of pattern do we see? We will see pattern of concentric circles. Okay, ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, बट यू कैन सी दिस डॉटेड पार्ट्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें दिखेंगे, आयन फाइलिंग्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे. सो दिस विल टेल अस के मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है लाइंस, बट हाउ विल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सो डायरेक्शन फर्स्ट यू विल ट्राई ऑन योर ओन. इस फिगर में हमें दिख रहा है करंट का डायरेक्शन, देखो इट इज डाउनवर्ड. See this? So just apply the right hand thumb rule. So like this you will hold the conductor and the current direction is downward. So what is the direction of the magnetic field lines? It is clockwise, right?
तो क्लॉकवाइज होगा, ये हमने राइट हैंड थंब रूल से देखा। बट एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटी में आप कैसे पता करोगे? सो कोई भी एक पॉइंट पे या एंड फाइंडिंग्स के ऊपर you can keep a compass. Okay, compass रख देंगे and then we will observe Tappu, hi Tappu, then we will observe the deflection of the compass needle. तो ये compass का north जिस तरफ भी point करेगा, that will be the direction of magnetic field at that point. So this is how we will find direction of the magnetic field lines. तो पैटर्न भी बन गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गया, एंड डायरेक्शन के लिए मैंने रख दिया कोई भी पॉइंट पे कंपास। सो हियर यू कैन सी, अगर कंपास यहाँ पे रखा है और मैग्नेटिक कंपास जो है इसको रखेंगे और इसका नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे सर्कल्स होंगे, एंड फाइलिंग्स ये यहाँ से अचानक गायब दिख रहे हैं, बट वो हैं ऑलरेडी। सी हियर यू कैन सी, ये आयन फाइलिंग्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे। एंड इन दिस हियर व्हेन यू कीप द कंपास, ये देखो नॉर्थ टुवर्ड्स, नॉर्थ किस तरफ पॉइंट कर रहा है, उसी तरफ हम ये एरो बना सकते हैं। दैट इज माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज दिस, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? जस्ट फिगर इट आउट। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड आउट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आई नो इट्स वेरी इजी, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में। सो प्लीज जस्ट इमेजिन, यू नो, whenever we need to close a tap or close any cap of a bottle, तो हम उसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हो क्लॉकवाइज का मीनिंग। व्हाई डू वी से द वर्ड क्लॉकवाइज? क्योंकि वो क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलता है, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंड दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली, अगर हम कोई भी, आई टोल्ड यू, कैप भी रोटेट अगर खोलनी होती है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सो दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये जो एरो दिख रही है, दिस इज ऑब्वियसली, ये देखो, दिस इज द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड दिस एरो, व्हाट डू यू थिंक, दिस एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो ये देखो, क्लॉक इस डायरेक्शन में ही घूमता है या उल्टा घूमता है, क्लॉक। So this is clockwise. Okay, 1 minute. And clockwise ही होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही हमने रूल देख लिया कि when the current is in downward direction, then it is clockwise. Okay. The next class time means which class? Which class time are you asking me about? Which standard? So let's see here. तो हमें पैटर्न भी मिल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंपास रख के हमें डायरेक्शन भी मिल गया फील्ड लाइंस का। हियर अगेन, इफ वी, लेट मी क्लियर दिस वन। ओके, इफ वी, यस डप्पू, आप क्या, व्हाट आर यू राइटिंग? एंड all, oh my god, all the classes timing, if you want to know all the classes timings, तो आप लर्न फटाफट यूट्यूब चैनल पे व्यू चैनल ऑप्शन में जाओ और यू विल सी ऑल द अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स, वहां पे मिल जाएंगे। और अगर कोई लाइव स्ट्रीम नहीं है अपकमिंग, तो आपको प्लेलिस्ट में सारी प्रीवियस क्लासेस भी मिल जाएंगे। ओके, एंड इन द कम्युनिटी सेक्शन, ये कम्युनिटी सेक्शन में क्लिक करोगे तो यू कैन सी द टाइम टेबल ऑल्सो। ओके, चलो, एंड हियर वी विल सी, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया हमने, पहले क्या था, इट वाज गोइंग डाउनवर्ड, इफ वी हैव द करंट गोइंग अपवर्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। एंड हाउ डिड वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सो पैटर्न देखो, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी आर स्टडीइंग फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, पैटर्न like this you will have at least 3 main shapes to study. straight conductor में क्या पैटर्न है, फिर सर्कुलर लूप में क्या पैटर्न है, और फिर सोलेनॉइड। ओके, 3 मेन हम पढ़ेंगे।
आज हम ये वाला पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्लासेस में वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग व्हेन अ कंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप and when the conductor is in the form of a solenoid, then what is the pattern, what is the direction magnetic field lines, वो हमें next sessions में देखना है. Today we are seeing about this straight conductor. Okay, now direction of magnetic field line find करने के लिए we have the right hand thumb rule which I have already explained to you, and we can also do this, and we can also call this the Maxwell's corkscrew rule. Now let's study the variation of magnetic field with current. अगर मुझे यहाँ पे सर्किट में करंट वेरी करना है, कैसे करूंगी मैं इसको? How will I vary the current in the circuit? अगर मुझे करंट इंक्रीज करना है, ओके, सो how will I increase it? अब मेरी बैटरी तो 12 वोल्ट ही है, ओके, आई एम नॉट चेंजिंग माई बैटरी, सो आई कैन चेंज द करंट by changing my resistance. ये रियोस्टैट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूं, लो रेजिस्टेंस, that will give me a higher current. So we will check okay, when we decrease the resistance, that means when we increase the current. So what is the difference in the magnetic field lines? That we will observe. Similarly, if you increase the resistance here, then you can decrease the current or low current पे क्या हो रहा है. Like this, you can study the variation of magnetic field with current passing through the straight conductor. So let us see what is going to happen. Difference क्या होगा अगर मैंने करंट को कर दिया इंक्रीज, रेजिस्टेंस को कर दिया लो और करंट को कर दिया इंक्रीज, what will we observe? I will observe कि higher current पे the magnetic field is very strong. ठीक है, magnetic field will be stronger. कैसे मालूम पड़ेगा ये मुझे? ये देख के कैसे मालूम पड़ेगा that the magnetic field has become stronger? From this pattern, how can you say that the magnetic field is stronger? तो ये जो pattern है ना, here the concentric circles तो आएंगे ही, but now what you will observe is कि ये जो circles हैं, they are much closer to each other. ठीक है, they are more closer and they are more dense. तो इस तरह हमें मालूम पड़ेगा कि higher the current, stronger the magnetic field and vice versa. If I lower the current, तो magnetic field हो जाएगी weaker और concentric circles भी जो हैं वो थोड़े कम dense हो जाएंगे. ठीक है, see like this. When I increase the resistance, high resistance पे करंट हो जाएगा कम, एंड ये जो है this will be the concentric lines will be, concentric circles will be less dense. ठीक है, so what we can say is more the current, stronger the magnetic field. Then second factor which we have to see is variation of the magnetic field with distance from the conductor. Okay, so ये length नहीं है, just make a correction here. ये है distance, with the distance from the conductor. ये मतलब in this case, हमारे केस में कंडक्टर क्या है? हमारी वायर. ठीक है, तो what do you think? What will be the variation? When as the distance from the conductor will increase, what will happen to the magnetic field? It's a very easy guess. As the distance, कोई भी फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि ये वो रीजन है जहां पे ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये रीजन अगर हम यहाँ से जितना दूर जाएंगे सोर्स से, ये जो वायर है ये हमारी सोर्स है, तो जितना दूर जाएंगे सोर्स से उतना वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो फोर्स है, वो कम हो जाएगा. राइट,
So, and this is a very normal phenomenon. हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़ा था कि जितना दूर होंगे बॉडीज या जितना दूर आप अर्थ से होगे अगर, ओके, दिस इज द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम यहाँ पे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम 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 होता जाएगा, नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द मैक्सिमम. सो सेम लॉजिक यहाँ पे भी यूज करना है. Okay, so let us see what we will say here. So depending on distance from conductor, so more will be the distance from the conductor, weaker will be the magnetic field. And field lines, ये field lines का pattern iron filings के pattern से हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो pattern में क्या difference होगा? Pattern में difference ये होगा कि we will see, let me show you, अगर ये है conductor तो इसकी जो field lines, if I am showing in pink, okay, so it will be like this. So first it will be concentrated, first the circles will be close to each other, लेकिन जैसे जैसे इसका distance बढ़ता जाएगा from the wire तो ये circles जो हैं दूर दूर, they will be spread far away from each other, okay, something like this. ठीक है, तो पैटर्न में हमें ये मालूम पड़ गया कि more the distance from the conductor, lesser will be the or weaker will be the magnetic field. And also when we keep the compass here, when we keep the compass, close the door, then the deflection of the needle will be less. इससे भी मालूम पड़ेगा कि strength of the magnetic field has become less. Okay, so I hope you understood the different factors. तो कुछ ज्यादा नहीं है factors. So main points I'll just summarize. What you have to remember? 5 o'clock which class? 5 o'clock आज कोई क्लास नहीं होगी डप्पू. 5 o'clock I think from 1st February 5 o'clock क्लास होगी. ठीक है, and that too for class 8 if I'm not wrong as per the timetable. तो हम यहाँ पे दो तीन मेन चीजें याद रखेंगे. What is the first thing? That when the direction of current reverses, then the magnetic field changes. Okay, वो भी reverse हो जाती है. Then second thing is, more will be the current, more या stronger will be the magnetic field. Third we'll remember is more the distance from the wire या from the conductor, less or weaker will be the magnetic field. Okay, तो ये factors से हमें समझ में आ गया. And so this was a summary of what we have done today. और सबसे मेन है इसमें right hand thumb rule से और Maxwell's corkscrew rule से we can find the direction of the magnetic field. तो magnetic field जो होती है वो वेक्टर है क्योंकि इसमें magnitude और direction दोनों है. Okay, so let's see now whether we will be able to answer some questions. Bye डप्पू. तो एक छोटा सा क्विज करते हैं फटाफट टू अंडरस्टैंड दिस, टू हमारा नॉलेज एकदम टेस्ट करने के लिए आज के सेशन का. जस्ट लेट मी शो यू द क्वेश्चन. या सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस, आई एम श्योर इट्स वेरी इजी. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डैश नियर द कंडक्टर and dash away from the conductor. So what will be the answer? Near the conductor तो so distance from the conductor, अभी हमने देखा more will be the distance from the conductor, weaker will be the magnetic field. तो magnetic field strength is dash near the conductor, stronger या weaker? Stronger.
and dash away from the conductor, weaker away from the conductor. So our correct option is second option. ठीक है, stronger stronger नहीं है, none of these भी नहीं है. Okay, डप्पू you're in class 9. तो 2 बजे क्लास 9 का लाइव सेशन इज 2 PM डेली. अभी मैंने 2 बजे मैंने ही लिया था. क्लास 9 एंड क्लास 10 आई एम टेकिंग. आई एम श्योर आपने देखा होगा ना क्लास 9 का 2 PM. अगर नहीं देखा है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. What will be the effect of magnetic field if the current is increased? So as I told you, current का अगर बढ़ गया तो magnetic field stronger हो जाएगी obviously. So we will write third option is correct. Magnetic field will increase. Let's attempt the next question. Which of the following correctly describes the presence of magnetic field near a straight conductor? स्ट्रेट कंडक्टर का शेप हमने आज पढ़ा है. आई टोल्ड यू कंडक्टर में स्ट्रेट होगा, सर्कुलर लूप है, देन सोलेनॉइड है. सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर. तो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट हियर? शेप अभी अभी हमने आज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपने आप को आयन फाइलिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हाउ विल दे अलाइन देमसेल्व्स? स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द कंडक्टर, व्हाट इज स्ट्रेट लाइंस? या फिर रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, या फिर concentric circles centered on the wire, या फिर none of these. So we have seen straight conductor में the pattern is of concentric circles. You know the meaning of concentric circles, right? All circles which have the same center, they are known as concentric circles. और ये concentric circles का center क्या है? It is the conductor or the wire through which the current is passing. Okay, try the next one now. Right hand thumb rule statement, very important question again. And statement भी मैंने आपको बता ही दिया था. What is the right hand thumb rule and how to find the direction of magnetic field? Curled fingers represent the direction, right? You remember? So what does this rule state? Correct statement कौन सा है? So the first one is current carrying conductor is imagined to hold in right hand such that thumb points in the direction of electric current. Then curved fingers give the direction of magnetic field. हाँ, ये तो सही है. सेकंड है current carrying conductor imagine to left hand तो हो ही नहीं सकता, तो इसका नाम तो right hand thumb rule है. Both are not correct. So this first answer is yes. The first one is right. Very good. And let's see the last question for today. What will be the effect on compass needle placed near a conductor if the direction of current is reversed? तो करंट को हमने रिवर्स किया था बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करके. तो कंपास नीडल जो है उसको क्या होगा? उसकी डिफ्लेक्शन में कुछ होगा डिफरेंस. कंपास नीडल अगर पहले यहाँ पे थी डिफ्लेक्शन, तो अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दिया, विल इट रिमेन लाइक दिस ओनली और विल इट चेंज? व्हाट विल हैपन? Yes, Dappu, very good. Right answer है. Magnetic field remains as it is, तो गलत है. Deflects in the opposite direction is the right answer. जैसे करंट रिवर्स हो गया, magnetic field का डायरेक्शन हो जाएगा opposite. You remember NSC I have showed you. North to south था करंट, तो ईस्ट में डिफ्लेक्ट हुई थी, और साउथ टू नॉर्थ जब गया था तो वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट इट वाज डिफ्लेक्टेड. So magnetic field deflects in opposite direction is the right answer. Very good, Dappu. I hope you join me at 2 PM also for your class 9 sessions. So you can give me good answers in that session also. Okay. So this was it for today's session. And thank you all for joining. Amukta. Okay. Yes, Amukta. So if you want to know class 9 के इसमें session में क्लास 9 के साइंस में वी आर डूइंग अ बायो चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इल. ओके, इसके पहले ही मैंने 2 बजे लिया था. एंड इन मैथ्स वी आर डूइंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर. ठीक है. एंड फॉर एवरीवन्स नॉलेज लेट मी अगेन टेल यू, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैथ्स क्लासेस होती हैं, एंड ट्यूसडेज थर्सडेज एंड सैटरडे आर द डेज फॉर द साइंस क्लासेस. ओके मुक्ता, या. And class 9 2 PM and for class 10 it is 3 PM.
So thank you for joining, and do also download the Learn फटाफट लर्निंग ऐप. उसमें एनिमेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत सारे. You will understand your topics well. And if you have any other feedback, suggestions, queries, तो write to me in the comment section. आगे के सेशंस में I will take up your queries. ठीक है? राजीव लोचन. Okay. ठीक है then. चलो, bye bye everyone and take care. Have a good weekend.